Good morning, all of you. I hope all of you are well now. Now I discuss in this pandemic position, we have reached in the second semester, and now we have to write the second semester course 7A mathematics 2 practicum. One practicum I discussed earlier, and second practicum is evaluation of mathematics textbook. Now I discuss this portion. पहले आपको सामग्री का तालिका लिखना शुरू करना होगा, फिर आधार और फिर परिचय का स्वीकृति. नाउ आई डिस्कस सम पॉइंट्स देयर आर. नंबर 1, एक पाठ्यपुस्तक क्या है. नंबर 2, पाठ्यपुस्तक का आवश्यकता है. नंबर 3, एक अच्छी गणित का पाठ्यपुस्तक का विशेषता है. नंबर 4, वर्तमान पाठ्यपुस्तक में संभव त्रुटियां. नंबर 5, गणित पाठ्यपुस्तक के तैयारी के सिद्धांत. नंबर 6, पाठ्यपुस्तक पर आयोग का वक्तव्य. नंबर 7, गणित के पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन. नंबर 8, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण के लिए आवश्यक मानदंड. सो नाउ आई डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज टेक्स्ट बुक. I also discuss about the evaluation of a mathematics textbook. You all of you know the evaluation is a continuous process. So a textbook is a proposal that helps the students and teachers to understand a particular subject in a class of a school. According to C-Viia said that a book designed for classroom use, carefully prepared by experts in the field and equipped with usual teaching device. Okay. According to Keaton, पाठ्यपुस्तक शिक्षा की मूल्य सामग्री क्या है. A textbook should be addressed to the people rather than to the teacher. Okay. गणित शिक्षा के लिए संदर्भ पुस्तक है और रेफरेंस बुक है. गणित पर पाठ्यपुस्तक का रचना का एक कठिन काम है. विश्लेषण की पद्धति में खोज के तरीके उपलब्धि करे हो गया. पाठ्यपुस्तक की रचना काफी श्रम गहना है. छात्रों को खोज से वंचित करने के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक का उपयोग करने की हमारे वर्तमान शिक्षा नीति में है. आई विल डिस्कस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर टीचर. सेकंड पॉइंट, आई विल डिस्कस द necessity of mathematics textbooks for teachers. Okay. A teacher can enhance his professional skills by using textbooks properly. Okay. Second point, it serves as guide for teachers to move forward in an orderly manner according to the prescribed curriculum. Number 3, teachers can use a textbook as a reference books also and TLM also. Or all of you know what is TLM? Teaching learning materials or learning teaching materials. Number 5, textbook give us teachers some important instruction on how to properly present any subject related to mathematics in the classroom. Now I discuss about the necessity of the books for learners. Second point, the necessity of books, necessity of math books for learners or students. Okay. Textbook helps students to understand mathematics properly in a particular class. It helps students to practice math properly and meet to the mathematics goals. Number 3, it helps students for self-learning and saves also times and energy. Number 5, it also provides important guidance to students to develop the correct mathematical approach. Then you have to discuss about the characteristics of good math textbooks. The points mentioned
properly, there are number one, library. The points are number one, library or pustakalay. Number two, language. Number three, content and format of the textbook. Content and format of the textbook. Okay. Number four, size or shape. Number five, exercise and pictures. Number six, general characteristics. Okay, I say it again. Number one, library or pustakalay. Number two, language or bhasha. Number three, content and format of the textbook, that is pathya ki samagri or proof. Number four, size or shape. Okay, that is akar. Number five, exercise and pictures, that is obhyas or kalpana. Number six, general characteristics or सामान्य विशेषताएं. वर्तमान पाठ्य पुस्तक में संभव त्रुटियां हैं. से त्रुटियां नंबर वन, प्रिंट त्रुटि. नंबर टू, पढ़ाई में त्रुटि. नंबर थ्री, भाषा का कमजोरी. नंबर फोर, सहज पाठ और पूर्ण चर्चा का अभाव. So I discuss again the textbook analysis also. The points are, in textbook analysis, the points are, to be noted. A textbook analysis, the points are number one, number two. Number one, structural aspects, and number two, analysis aspects. Okay. Number one, structural aspects. Structural aspects are also size of the textbook. Okay. Number two, quality of the paper. Number three, format or front page. Okay. Number four, printing. Number five, margin. Okay. Number six, binding. These are the points of structural aspect. The structural aspects are size of the textbook, quality of the paper, front page, printing, margin and binding. And analysis aspects are number one, selection of the books. Number two, organization of the context. Number three, present of the context. Number four, summary. Number five, evaluation. Okay, and number six are authorship. Number seven, that is reference. Okay, these are the analysis of a textbook. So पाठ्य पुस्तक तैयार करने के सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक प्रिपरेशंस. The preparations are number one, it again depends on the following principles. Number one, curriculum principle. Number two, disciplinary principle. Number three, pedagogical policy. Number four, technical policy. Number five, contextual policy. And number six, introductory policy. You have to discuss these points. There are the statement of Mudaliar Commission. All of you know what is Mudaliar Commission?
This commission would be in 1952 to 1953, and the statement of Kothari Commission. This commission is going on from 1964 to 1966. You have also mentioned the two commissions. Now you have to discuss about the evaluation of mathematics textbook. Number one, textbook analysis is done through two processes, namely descriptive analysis and critical analysis. नंबर वन, डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस और वर्णनात्मक विश्लेषण। ये पाठ्यपुस्तक की महत्वपूर्ण सूचनात्मक विशेषता की उजागर करता है। विश्लेषण प्रक्रिया के वर्णन और व्याख्या करके एक पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण किया जाता है। नंबर टू, क्रिटिकल एनालिसिस और महत्वपूर्ण विश्लेषण की प्रक्रिया में प्रासंगिक साहित्य और उसके आंतरिक गुण और स्थितियों को संदर्भ और पाठ्यपुस्तक विश्लेषण किया जाता है। पाठ्यपुस्तक विश्लेषण के लिए आवश्यक मानदंड ये फिर से दो वर्ग पर निर्भर करता है, एक संरचनात्मक और दूसरा विश्लेषणात्मक पहलू है। नाउ यू हैव टू डिस्कस अबाउट द मैथ टेक्स्ट बुक एनालिसिस इन योर करिकुलम। हियर आई डिस्कस द एनालिसिस ऑफ मैथ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9 and 10 in the syllabus curriculum of West Bengal Board of Secondary Education. There are some general information of mathematics textbooks like as selection of books. I have taken here the books of class 9. Name of the publisher and agency Biplab Hawal. New Book Syndicate 35 College Street, Kolkata 70073. And the first publication is September 1905 and reprint is January 2020. Okay, ISBN number and 5, name of the printer and Kolyan Bhomik for Mudram Bharati, etc. And number 6, author introduction. Author is Amitabh Mishra and its description. Now you have to review the 9th grade of the math textbook. The points are structural aspects of mathematics textbook और पाठ्यपुस्तक का संरचनात्मक पहलू। नंबर 1, शेप और साइज टेक्स्टबुक और पाठ्यपुस्तक के आकार, द क्वालिटी ऑफ द बुक पेजेस और पत्ती की गुणवत्ता। नंबर 4, द फर्स्ट पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक और पाठ्यपुस्तक पहल पृष्ठा। नंबर 4, प्रिंटिंग और मुद्रण। नंबर 5, द मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट बुक और पाठ्यपुस्तक का मार्जिन है। और नंबर 6, बाधा और बाइंडिंग। नाउ यू हैव टू डिस्कस द 9th grade textbook good aspects that can be noticed in the structural aspects. Also you have to discuss about the demerits of binding and quality of the pages. Analysis of the content of the textbook is last aspect और पाठ्यपुस्तक आदि सामग्री का विश्लेषण अंतिम पहले है। सामग्री का विश्लेषण 7 करके निर्भर करता है। सामग्री चयन, सामग्री संगठन, सामग्री प्रस्तुत, सामग्री सारांश, मूल्यांकन, लेखक परिचय और संदर्भ के होता है। Now you have to write the good things that can be noticed in the analysis of the content of 9th grade textbooks or that is subject in the textbook number. That are following. Number 1, textbook should be relevant and extracurricular item that help the students in the other exam also. Number 2, the language is simple and would be understandable. Number 3, also be noted the example and very simple and very well defined. Number 4, at the end of the chapter there is a relevant exercise on the chapter. Okay, the shortcoming that can be noticed in terms of the content analysis in the 9th grade textbooks are: number 1, some of the topics covered in the chapter are not enough for students to learn information. Number B, a few chapter examples are not enough. Number C, there is no mention of project work or formative evaluation. You also know what is formative and summative evaluation in any chapter of the book. Finally, you have to mention the solution. The solution are: number 1, those are followed. पाठ्यपुस्तक का आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न रंगीन चित्रों का उपयोग करने की आवश्यकता है। नंबर 2, पाठ्यपुस्तक की मुख पृष्ठ की गुणवत्ता के बढ़ने के लिए आवश्यकता है। नंबर 3, प्रत्येक अध्याय में उदाहरण की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए। नंबर 4, आपको अधिक शोध प्रश्न पूछने होगा। इस प्रकार हमें कोर्स 7 प्रैक्टिकम दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक लिखना होगा।
Okay, thank you.